Yes, Am I sir. am I audible, students? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so today we are starting this first order op-amp circuits. Okay, first order means integrator and differentiator. Okay, so integrator circuit, integrator circuits using op-amp. Okay, so integrator circuit means the output of op-amp, okay, is proportional to the integral of input. Okay, so suppose we have a circuit like this. And if I add here a storage device like capacitor, so, and this is grounded. Okay, and I'm taking here this at this point, I'm taking output V naught. Here we have ground. Okay, so now calculate what is R1 is given, this resistance is given R, and this capacitance is given C. So calculate what is the output. This is V input. Okay, so apply KCL. So if this is V input, this is grounded, so this is also grounded. Okay, suppose this current is IR and the current which is going through capacitor is IC. So we apply KCL. Okay, so it will give us IR equal to IC. Okay, now IR is what? IR is V input minus 0, V input minus 0 divided by R. This is I, this is IR. Okay, similarly if I want to write for capacitor, so we know the current in capacitor is given by C dV dt. Okay, so C d upon dt and difference of voltage across the capacitor, so this voltage is 0 minus this point is V naught. Okay, this become V naught. So if you solve further, this will give us V input upon R C minus D V naught upon dt. Okay, now I have to get the V naught. Okay, so if I take V naught, so dV, that will be equal to minus V input RC dt, and if I integrate this one, this will give me V naught minus 1 by RC V input dt. Okay, so this is between V input is also function of time, if it is function of time dt. Okay, so this is my equation. Okay, if between time 0 to t V input is given, I can get the V output value. Now since my V output is an integral of V input, okay, that means my integrator, this op-amp circuit, it acts as a integrator. Okay, so let us solve one problem on this. So this is clear? Yes, sir. I'm not able to hear you. Am I audible? Yes, sir. So this is the integrator formula. Okay, if the circuit is, if the capacitance is in series with this R, okay, instead of feedback, if you are not giving feedback through capacitor, okay, then this circuit is act as a integrator. So let me solve one problem on this. So I have a okay.
this circuit, then this is minus, this is plus, this is V naught, this is 2 microfarad, okay, and this is grounded, okay. This value is given 3 mega ohm, and this is 100 kilowatt, okay. This is V1, and here I have a V2. So V1 is given as 10 cos 2t milliwatt, and V2 is given as 0.5 t milliwatt, okay. So it says calculate the V output, assuming that in the beginning the voltage across capacitor is 0. So that means initially capacitor is uncharged, okay. There's a, because we know capacitor is a memory element, okay. So they are already given that in the t is equal to which value? V1. V1 is 10 cos 2t, 10 cos 2t, and V2 is 0.5 t millivolts, okay. So we know the formula. What is the formula? V naught equal to 1 minus RC upon, okay, V1 dt, okay, minus 1 by R. So say this is R1, okay. So say R1, I say this is R2. So this will become 1 minus R2C V2 dt, okay. Now R1 is 3 mega ohm and C is 2 farad, okay. So I can write minus 1 upon 3 mega ohm 10 raised to power 6, okay, and this is 2 microfarad, 2 into 10 raised to power minus 5. V1 is given 10 cos 2t, okay, millivolts, and minus 1 upon R2 is given 100 kilo ohm. So Sir, it is V1 dt. yes, V1 V2 is given na, it's V1 function of time. No, sir, in integration. V1 dt, V2 dt. Just now we derive the formula na, so you need to dt tha usme. So this has become 100 kilo ohm into RC is same 2 microfarad, okay. V2 is 0.5 t dt. अब इसको solve करो, okay. I am giving the answer. The answer is minus 0.833 sin 2t minus 1.25 t square. So millivolt. चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर हाँ 1.66 आ रहा है सर स्टार्टिंग में तो सर 1.6 कैसे आएगा अभी? 10 cos 2t ओमेगा t है ना? यस सर तो ये sin 6 पे कैंसिल हो, कैंसिल 6 आ गया, cos 2t के साथ sin 2 2/2 होगा ना सर, तो ये हो गया आपका 10/3, ठीक है, 10/6 सर 10/6, हाँ 10/6 5/3 ना, यस सर 5/3 इंटू cos t कितना आता है? सर sin 2, cos 2t sin 2t/2 ओके, सो कितना आ जाएगा? 5/6, 5/6 कितना होता है? 5/6 हाँ सर ठीक है सर, ठीक है माइनस 0.83 तो आता है, हाँ सर ठीक है मैं 3 लिख लेता हूँ, एंड माइनस हियर अगेन 1 किलो ओम, ओके, सो 100 10 to the power 5, 10 to the power 5, 10 to the power minus 1, okay, so this become 5 into 0.5, okay, t का t square by 2, so if you solve this one, okay, this become 2.5 divided by 2, 1.25 t square, ठीक है, सही आंसर.
Yes, sir. Now this was integrator. Okay, so this is called first order op-amp circuit. Now similarly, let me solve for differentiator. So put the heading differentiator. Okay, so देख रहा हूँ. I have a circuit minus plus. Okay, this is grounded, and here I have capacitor. Okay, now जगह बदल दिया हमने, जहाँ कैपेसिटर था वहाँ रेजिस्टेंस कर दिया, और जहाँ रेजिस्टेंस था कैपेसिटेंस कर दिया. ओके, this is P, this is a plus. So V naught, here we have a grounded. This is R, this is C. Okay, and here we are applying V input. Okay, so again you have to write the equation. Okay, equation क्या हो जाएगा? IC into IR. So this is 0, so this is also 0. Okay, now the current through capacitor IC is equal to C dV dt. Now D, instead of D, V here it is V input at 0. So dV input upon dt equal to IR. IR 0 minus V naught upon R. Okay, so if I want V naught, this will be minus RC dV input upon dt. Okay, so this is my differentiator circuit. So whatever input signal we will apply here, the output will be differentiation of input. Okay, so let me solve a simple problem. ये मिटा दूं क्या? Yes, sir. सर वैसे फर्स्ट ऑर्डर का तो यहाँ पे मतलब क्या होगा? तो ये जैसे दोनों सर्किट्स फर्स्ट ऑर्डर ओप-एम्प सर्किट्स हैं, तो हाँ. फिर फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जैसे हमने नेटवर्क एनालिसिस किया था, जब सर्किट में आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टर एलिमेंट रेजिस्टर सर्किट था, देन आपके पास जो किरचॉफ लॉ लगाने से आपका जो इक्वेशंस आ रही थी वो सब अलजेब्रिक इक्वेशंस थी. ओके, वी और आई में. और व्हेन वी इंट्रोड्यूस दिस योर आरसी और आरएल टुगेदर इन सर्किट, ओके, तो हमारी जो किरचॉफ लॉ लगाने से जो इक्वेशंस आ रही थी, ओके, वो हमारी आ रही थी डिफरेंशियल फॉर्म में. अभी भी तो जो इक्वेशंस है वो डिफरेंशियल फॉर्म, जब कैसे लगा रहे हैं तो इक्वेशन तो डिफरेंशियल फॉर्म में आ रही है ना. And that is also first order. Okay, differential Okay. first order. That's why it is called first order open applications. Okay, sir. So now we have circuit. So C is given 0.2 microfarad. Okay, and R is given 5 kilo ohm. Okay, so we know what is the output. Output is, or now what is input first? Okay, so they have given an input wave. This is input wave. Okay, the peak value is here V naught V. Okay, and here the scale is millisecond. Okay, so this is 0, this is 2, this is 4, this is 6, and this is 8. Okay, so the स्क्रीन कोई हो रही है सर, स्क्रीन के बाहर है सर. क्या स्क्रीन के बाहर है? ये वाला? सर फिगर यस सर. अच्छा, बाहर है क्या? लेकिन मैं कर देता हूँ. यस सर. So we have input wave is given like as a triangular wave. Okay, and this peak value is given as 4 volts. Okay, this is 4, and this is my V input voltage. Okay,
and this is time t in millisecond. So this is your 0, 2, 4, 6, 8. Okay, so ये एक वेव है जो बार बार रिपीट हो रही है. So now I want to get my V output. So I know V output is what? V output is minus RC dV input upon dt. Okay, so first of all I should know what is my dt. Okay, RC की वैल्यू कितना हो गया? RC कितना है? RC is 0.2 microfarad. Okay, C is 0.2 and R is 5 kilo ohm. So if you multiply 5 kilo ohm, so this become 1. Okay, 10 to the power minus 10 to the power minus 3 what seconds. Okay, now get the equation of V input. V input का equation क्या हो जाएगा? So slope of this, what is the slope of this graph? सर 2t 2t है कितना है? 2t है कि 2000t है? सर 2t है. अरे भाई सर, स्लोप क्या होता है? अरे मिली सेकंड में निकालना है क्या सर? ये मिली सेकंड में ना, तो कितना आ जाएगा? 2000t आ जाएगा. We suppose this is equation. This is y plus mx plus c equation. Okay, so m, so m कितना हो गया? 2 upon 4 upon 2, slope 0 4. So and this is a millisecond, so this become 2000t plus say c. Now I want to get the Yes, constant sir, value 2000. c. If I put t is equal to 0, okay, then c भी t is 0 equal, सर. हाँ, c भी 0 c 0 ही c है. भी 0 सर. Okay, यस सर. so this is your 2t. कहाँ से बेटा? टाइम इज 0 to t 2. इस सेकंड में आपकी इक्वेशन है 2000t. ओके, नाउ से दिस इज माय v input. My v input value is this one. Now for time 2 to t 4 second. Okay, between 2 to 4 ये milliseconds, ये milliseconds है. क्या इक्वेशन हो जाएगी? स्लोप तो सेम ही है, माइनस में आ जाएगा स्लोप माइनस 2000t. कांस्टेंट कितना आएगा? +8 कितना? +8 आएगा सर. +8 आ जाएगा. +8. Very good. Okay, so this is your equation of this line. Okay, slope is same but the constant value is 8. So this is the equation. Now you want V output, so simply multiply this RC and differentiate this equation, so you'll get V output. Okay, so if I want to get V output, so my V output will come minus 10 to the power minus 3 into this become 2000. Okay, between 0 to t into 2 millisecond, and this become also minus 2000 between 2 to t 4 millisecond. Okay, so if you multiply this one, कितना आ जाएगा? -2, so this become -2 and this become +2. So -2 volt plus 2 volt. So 0 t 2 millisecond, 2 millisecond, 2 t 4 millisecond. Okay, so that means if you draw now this one, okay, so 0 to t में मेरी value -2 है and 2 to 4 में मेरा +2 है. So if I draw my output, okay, so this is the input which is going, we are applying here, and output, my output will be this way. It will repeat. So this will become a 0. This is V output. This is -2 volts. This is +2 volts. So this is 2 seconds. This is 4, and this is time t in milliseconds. This is 6. This is 8. Okay. So when you are applying a triangular wave, okay, to input of this op-amp, then you are getting output as a square wave. Okay, तो ट्रायंगुलर वेव का जो डिफरेंशिएशन होता है that is equal to स्क्वायर वेव. आगे चले. Okay, now let me solve some previous year's problems, okay, on op-amp.
वो Okay, so I have given one circuit. This plus minus, okay, and this came in IIT-JAM. Okay, we have a resistance here, say 1 kilo ohm. I'm applying plus 5 volts here, and this is as a voltage flow follower, and here I have a transistor. Okay, this is NPN transistor. For beta is given 50 volts, and here I have a plus 10 volt VCC. Okay, and here I have a ground, a resistance of 1 kilo ohm. So this is my E. Okay, you know, ammeter, there's a base, there's a collector. So what they're asking question, okay, this current is I, is this IE. They're asking what is the value of base current. Okay, so how to calculate base current value? कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? करो. This is plus 5. I'm applying here. कैसे करेंगे? भी आपको बीटा दे रखा है. सर डायरेक्टली 5 वोल्ट आ जाएगा एमीटर से सर, क्यों? क्योंकि सर वो वोल्टेज तो रिड्यूस होगा नहीं। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली 5 क्यों आएगा बताओ पहले. ये 5 वोल्ट से, या तुम सही बोल रहे हो 5 आ जाएगा, पर ये 5 यहाँ पे 5 आएगा तभी तो यहाँ 5 आएगा. यस सर। तो यहाँ 5 क्यों आएगा बताओ भी. इसके तो अंदर जो करंट जाएगी वो तो 0 है. यस सर, यस सर। तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है. करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 0 है, शॉर्ट सर्किट है ये. तो जो सारा वोल्टेज है वो यहाँ पे जाएगा 5 वोल्ट, जैसे प्लस 5 वोल्ट ईयर. अब ये ओपन की करंट 0 इसलिए है क्योंकि माइनस वाला ग्राउंडेड है। नहीं ऐसा नहीं है. अभी करंट यहाँ से करंट यहाँ से तो फीडबैक ही नहीं है ना. और इनपुट टर्मिनल, अच्छा और इनपुट टर्मिनल से करंट 0 जाता है. तो इससे यहाँ से करंट जा ही नहीं रहा है. इसका मतलब ये सारा वोल्टेज यहाँ लग जाएगा. अभी अब जो वोल्टेज यहाँ पर है वो यहाँ आ जाएगा. ओके, और ये वाला वोल्टेज फिर क्या यहाँ पे आ जाएगा आपका. तो नाउ यू नो आई ई. सर इनपुट पे 0 तो तब होता है ना जब पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक ग्राउंड होता है। तो इक्वल होता है, जो यहाँ पर आएगा वो इधर आएगा आइडियल ओपन की कंडीशन में. ठीक है. अच्छा ग्राउंड में 0 है तो यहाँ 0 तो वो भी 0 हो जाएगा. अभी यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, सेम आएगा. ठीक है. अब ये 5 है, अब ये पूरा शॉर्ट सर्किट है यहाँ से, तो यहाँ 5 वोल्ट आ गया. सो आई कितना हो गया आपका, आई 5 वोल्ट डिवाइड बाय 1 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर हो गया. नाउ योर बीटा इज गिवन, सो आई कैन राइट बीटा प्लस 1 आई बी. ओके, 5 मिली एम्पियर. सो आई वांट आई बी, आई बी विल बी 5 अपॉन बीटा प्लस 1. 50 बीटा भी कर सकते हो डायरेक्ट, 50 भी कर सकते हो, और 51 कर दो मिली एम्पियर. कितना आएगा 0.0 0.09 आएगा, 0.08 आएगा. कितना आ रहा है 5 डिवाइड बाय 51. 0.09. 0.09. Okay, so 0.09 milliampere is the answer. Or if you take beta equal to 50, then it will become 0.1 milliampere. Okay, so it will approximately, it is equal to 0.1 milliampere. Okay, so I am rubbing this one.
Now I have one more question. Okay, this is also IIT-JAM. This is minus plus. Okay, this is given 1 kilo ohm. Sorry, this is given R. Here we have V naught. This is also 2R. Okay, and then at input, yes, here we have been given a resistance here 1 R. Here is 1 volt. Okay, I have one more R. This is equal to 2 volts. Here I have one more R, and this is equal to 3 volts. Okay, so you're asking what is the value of V naught? कैसे निकालोगे? तो ये कौन सा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है? नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग। तो निकालो कितना आ रहा है? Answer should be, I think, 6 volt. Let me first write the answer, and then you people let me know whether it is correct or not. So V naught is 6 volt. So कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर हाँ, सर ये नॉन इन्वर्टिंग है, कैसा पता चला? ये तो ग्राउंडेड है ना, अच्छा, वो डायरेक्ट ग्राउंडेड है। और इनपुट दे रहे हैं यहाँ पर। ओके सर, ओके सर। ठीक है, so we'll take one source at a time. We'll do superposition principle. V naught. Okay, so whatever voltage will be there, that will be 1 plus 2R upon R, okay, into V. So if I ground this one, both, okay, that means what will happen? These two are the parallel. Okay, so R into R, 2R. Okay, so this become R by 2. This become R by 2. Okay, this total become R by 2. Okay, and these are connected to ground. So this are, I can write this is as R2. Okay, now I can get what is V input here. So V input will be, okay, how much? 1 divided by R plus R, 3R by 2 into R by 2. So this will become, okay, how much it become? 4 by 3. Okay, it become 2 into 2, 4 by 3. So because of first I'm getting 4 by 3. Okay, again minus 1 plus 2R upon R into, when I take 2 volts. Okay, so other 2 is, so here I can take 8 by 3. This become 8 by 3 and plus 1 plus 2R upon R into, और क्या था, 3 वोल्ट था क्या? 3 वोल्ट था, 3 volts. Okay, so if I take 3 volts, okay, so this become 2 and 2, 4, 12, 12 by 3, 4. So this become 4 volts. Okay, now solve this one. कितना आ रहा है? If I solve this one, this become 3, this become 4 plus this become 1, 1, 3, 8, and this become 3, 12. कितना आ रहा है ये? 24 आ रहा है। आई थिंक कहीं मिस्टेक है, कहीं मिस्टेक हो गया ना? सर 6 वोल्ट ही आएगा सर। ये सर मिस्टेक क्या ये हुआ? सर 4 कहाँ से आया सर? हाँ? ये 4 कहाँ से आया सर? 4 कहाँ से आया सर? 1 by 3 आ रहा है सर। अच्छा, इनपुट 4 by 3 है सर। 1 by 3 कैसा मेरा? 1 by 3 आएगा ना सर? सर R by 2 अपॉन में R plus R अच्छा, by 2 होगा ना सर? मैंने करंट निकाला था पहले। सपोज मैं निकालता करंट 1, ओके, सो R plus R by 2, ठीक है, ये तो मेरा करंट था,
मल्टीप्लाई पर रेजिस्टेंस R/2, तो ये कितना आएगा? यस सर। 1/3 3 1/3 आ रहा है। अच्छा 1/3 आएगा। 1/3 आएगा। ओके ओके ओके। यस So सर। this is 2/3, yeah? यस सर। और this and this is और दैट इज 3/3 1. 3/3 1 हो गया मीन। यस सर। Okay, so now this become 1 plus 3, this become 1. Okay, this 3, this become 2. Okay, this cancel 3, so this becomes 6 answer. वो ये कैंसिल हो जाएगा ना इससे 2. ओके करेक्ट। अच्छा, जो मैंने होमवर्क दिया था वो किया था क्या किसी ने? आई गेव वन होमवर्क यस्टरडे, किसी ने दिया नहीं आंसर मुझे उसका। सर मैंने पोस्ट किया था ग्रुप में। कितना आंसर आया था? सर -1 मिलीवोल्ट। नहीं वो नहीं, उसके अलावा मैंने एक जो कल इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर कराया था, ठीक है, उस पर क्वेश्चन दिया था मैंने, जेस्ट 2020 का। Yes, sir. -5.25 volts. हाँ वो 2.5 वाला, एक वन प्लेस इज 2.5, वन प्लेस इज 2.25, वो वाला क्वेश्चन कितना आया था उसका आंसर? So -5.25 volts. हाँ शायद उतने आएगा, बिकॉज द आंसर विल बी 21 into difference of these twos. Okay, so the difference of this is 0.25, तो कितना आएगा? 21 into 0.25 कितना आएगा? 5.25. तो तुम्हारा आ रहा है आंसर, आ रहा है ये वाला? Yes, sir. ठीक है, चलो बाकी लोग भी करके भेजो। Okay, so now let me solve some other problems. This is grounded. Okay. Okay, so this problem came in IIT JEST 2019. Okay, okay, so okay, पहले JEST 2015 देख लेते हैं। JEST 2015 में क्वेश्चन आया है। So they have given you minus plus, ये तो हमने कल कर लिया JEST 2015 का। Then you have to solve it now for 17. Okay, so I have a op-amp, minus plus, here I have a resistance, I have one more resistance here R, and I have one more resistance here R. Okay, and this is grounded, and here one more resistance is there R. Okay, and this value is also R, and here I am applying V input plus minus, this is plus, this is grounded, so grounded. Okay, so they are asking what is V output. Okay, and they have given the values of power supply minus VCC to plus VCC, and the values are VCC VEE, that is equal to plus 15 volts. Okay, so this is VEE, slightly different, VEE. Okay, 15 volts, and R value is 2.2 kilo ohm, and V input is 2 millivolt. Okay, so what is the value of V naught with respect to ground? So ये कौन सा सर ये सब सिंपल इन्वर्टिंग है। हाँ सिंपल इन्वर्टिंग होगा सर। हाँ, तो इसमें निकालना पड़ेगा ना इसमें भी, आपका ये ग्राउंड है तो ये भी ग्राउंड हो गया, ठीक है, तो ये ग्राउंड है तो ये भी 0 हो गया। अब ये ग्राउंड है, यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है,
और ये भी ग्राउंड है, तो कैसे करेंगे इसको? ये दोनों क्या है, ये दोनों कनेक्टेड है, यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है। यस सर, वो दोनों ऊपर पैरेलल है सर। तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ओके, यस सर, और तो फिर सीरीज में हो जाएगा। तो R/2 हो जाएगा। ओके, R/2, यस सर, बिकॉज दो बोथ आर पैरेलल। तो आपका RF कितना हो जाएगा? 3R/2 हो जाएगा। Okay, now it is simple. So you can tell what is the output. Minus RF माइनस upon 3/5 3R/2 upon R. Okay, into V input. V input is what? 2 millivolt. So this become minus 3 millivolt. Minus की plus? सर 1.6 आएगा ना सर? 1.6. सर ये इन्वर्टिंग वाला होगा ना सर? ये इन्वर्टिंग है, ये तो इन्वर्टिंग है ना, तो तभी तो RF अपन आ रहा है। वही तो सर। 3R वी इन को लेके करेंगे या वी ए को लेके करेंगे सर? सर और इसमें और तो किसको करना है? RF है नहीं ना सर? RF तो है नहीं इसमें सर, RF तो 0 है ना सर? RS कहाँ पे? RS कौन सा? ये नहीं सर, फीडबैक सर्किट होना है सर इसमें। ये है ना, फीडबैक सर्किट तो है ये। ये तो ग्राउंडेड हो रखा है पहले से। जस्ट लेट मी चेक। नहीं वो अच्छा, वो मैंने गलत प्लॉट किया। ये तो R से कनेक्टेड है, ये फीडबैक है। ओके, वो तो ये ग्राउंड तो R वाला था, R/2। ओके, ये तो इससे कनेक्टेड था। सर्किट गलत, ठीक है। सर्किट ऐसा था इनिशियली, ये सर्किट ऐसा था R। ओके, एंड दिस वाज वन मोर R, ऐसा था, एंड देन हियर इट वाज R, वो ग्राउंडेड था। ओके, तो ये तो कनेक्टेड था ही। कितना आ रहा है शिवेश? शिवेश क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? अभी कर रहा हूँ सर। मुझे चेक करने दो एक बार कितना आ रहा है। सही, -3 वोल्ट ही आ रहा है। ओके, सर -3 आ रहा है सर। नाउ JEST 2019. Okay, so JEST 2019. Okay, they have given one question, माइनस प्लस, इसको बोल दिया C. ओके, here they have feedback R. Okay, here we have V output, and they have input here R. Okay, and this is connected to V input, and their V input is here, this point A, and here resistance is, and here this point is A, this point is B. Okay, क्या पैसे? and पैसे R. Okay, so now you asking, कट हो रहा है क्या उधर? कट हो रहा नहीं है। So this is V input. This is V input. I'm asking, if C is connected to A, okay, what is the output? If C is connected to B, then what is the output? Okay, so first we calculate when C is connected to B. So when C is connected to B, तब क्या होगा? This become ground. Okay, and then your V output will be simple amplifier circuit. Okay, inverting amplifier. So minus R upon R V input. That means your V input will be minus V input. Okay, this first case, when this terminal is connected to this one, so this become ground. Okay, so this become ground. So simply I am applying here V input here. Okay, and this will give me what? This will give me V input equal to minus V output equal to Y minus V input. Now if I connect this C with this A, then what will happen? तब क्या होगा बताओ? This is R. सर 2V इन हो जाएगा सर। तो अभी ये R में तो खर्च होगा नहीं हो। हाँ,
तो ये वोल्टेज यहाँ पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. सो ये क्या हो जाएगा आपकी, ये क्या हो जाएगा आपकी डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डिफरेंस एम्पलीफायर या खाली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या आएगा? सर इन्वर्टिंग आएगा ना सर? भी इन्वर्टिंग क्यों आएगा? भी अभी नहीं, आपके हाँ सर, आपके इन्वर्टिंग पे भी वी इनपुट है और इस पे भी वी इनपुट है, जो डिफरेंस एम्पलीफायर आ जाएगा। सो इफ आई टेक वी आउटपुट, सो व्हाट आई विल गेट माइनस आर अपॉन आर वी इनपुट, ओके, एंड देन प्लस 1 प्लस आर बाय आर, 1 प्लस आर बाय आर V input, okay. So this will give me minus V input and this will give me V input, 2V input, okay. So this will give me V input. So that means the option क्या हो जाएगा, when it is connected to C you get V output equal to V input, and when it is connected to B you get V output equal to minus V input. That is given as an option. Check. That is given V, okay, that is given as an option C, okay, A, that is the correct answer. So when it is connected to here, C is connected to here, B, you get minus in V output equal to V minus V input, okay, and when it is connected to A, you get V output equal to V input. Let me solve some of the one. Okay, so I think जितना अभी पढ़ाया है उससे सारे क्वेश्चन तो हो गए हैं। सर ए पे कनेक्ट होने से डिफरेंशिएटर एम्पलीफायर बन जाएगा ना? डिफरेंस एम्पलीफायर, ओके सर। क्योंकि इस पे भी इनपुट है, इस पे भी इनपुट है, ओके। तो अभी जितना कराया उससे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब 2-3 चीज फिल्टर करानी है और कुछ चीजें करानी है वो कल कराएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ओके। सो आई एम स्टॉपिंग दिस क्लास हियर टुडे, ओके, मैं जल्दी खत्म कर रहे हैं, ओके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो सॉलिड स्टेट कब से स्टार्ट होगा सर? सॉलिड स्टेट हम कर देंगे इसको खत्म करके 3-4 क्लासेस और करके इसकी, यस सर। तो कर देंगे हम लोग 10 नेक्स्ट वीक कर देंगे सॉलिड स्टेट स्टार्ट। ओके सर, ओके, थैंक यू सर।